So, good morning all. So, our last class रे हमें देखिଥିଲେ planning देखिଥିଲେ economic planning and LPG reforms, right? Last two classes रे we have covered economic planning. So, 5 year plans, our नीति आयोग planning commission briefly difference देखिले नीति आयोग तार composition देखिले and the LPG देखिले, right? How the face of the Indian economy changed after 1991. Right, तो सेरा देखिले तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करिवा मॉनेटरी पॉलिसी राइट सो मॉनेटरी पॉलिसी कोन ताको आरबीआई केमित ताको मैनेज करे एंड देन आरबीआई फंक्शंस वगैरह हम इसको देखिवा ओके ओके सो मॉनेटरी पॉलिसी कोन सो बेसिकली इट इज द मनी सप्लाई इन द मार्केट जो मनी सप्लाई अछि ताको कंट्रोल करिवा ताको रेगुलेट करिवा को आ माने interest rate money supply केमिति से change करिए we'll see that by changing the interest rates and there are various other ways so regulating the money supply I think market रे जो supply of money अछि ताको regulate करिया ताको control करिवा is known as monetary policy एटा काहे करिवे this is to control inflation right and stabilize the currency inflation कोन inflation जो general जो trend हमर increasing price trend को हमें inflation कहू राइट तो किसी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेशन तो ठीक अछि राइट अच्छा बोलो इन्फ्लेशन बिल्कुल रहया कथा ना रहया कथा नो देयर शुड बी इन्फ्लेशन और शुड नॉट बी एट ऑल व्हाट डू यू थिंक ରହିବା କଥା sir काय रहया कथा इन्फ्लेशन sir money balance टा जानी हबोनी economic year रे if गोटे imbalance is not there गोटे मिनिट हाँ तो इन्फ्लेशन रहया दरकार ओके व्हाई रहया दरकार आई थिंक somebody wrote in the comment for growth right it should be there for growth यदि जमारू दरदाम वृद्धि पाइलानी ताले जणे काहे कि एंटरप्रेन्योर हबो काहे कि किछि प्रोडक्शन करिवो राइट यदि इन्फ्लेशन रहिबनी जणे काहे कि प्रोत्साहन माने पाइबो कोन दरकार ताकू जे कि गोटे बिजनेस स्टार्ट करिवो इन्वेस्टमेंट करिवो कोन दरकार दादा राइट किछि ना किछि प्रॉफिट दरकार यदि बिल्कुल दरदाम वृद्धि नथिबो किछि प्रॉफिट पाइबनी सो ग्रोथ रहिबनी रिसेशन हे जिवो अनएम्प्लॉयमेंट हबो राइट तो किछि हद तक भलो right like I mean the 4% go is good right so it is manage to 4 plus minus 2 करो but 4% 8 वाला जो creeping inflation हम को it is fine right but बेसी बढ़ी गले असुविधा right the inflation बेसी बढ़ी गला like which is हमर जते कि इनकम अछि ताकू टपी गला right then it is bad right ता जो inequality बढ़ी जीवो जे गरीब लोक they have to spend now more on जदि फूड बेसी पड़ी गला तले फूड रे बहुत बेसी पैसा पड़ेबो एजुकेशन बढ़िला एजुकेशन बेसी पैसा पड़ेबो एंड फाइनली दे विल नॉट हैव मनी फॉर सेविंग्स नथिले कैपिटल भी आसी पर इन्वेस्टमेंट भी सेविंग्स थिले से जण सेविंग्स करिवो पैसा पुंजी गला पर इन्वेस्ट करिवो राइट पुनी ग्रोथ हबो तो दैट थिंग विल बी ड्रेन्ड राइट एंड फाइनली टू तमरो जो कोंगोंदे हाँ तुम्हारा सेविंग्स होइबनी एंड ऑल एंड देन इट विल अगेन inflation will lead to तुम्हारा दरदाम पुणी तुम्हारा like what you call मतलब से साइकिल ले पड़ेबो राइट अगेन तुम्हारा बहुत सारा तुम्हारा बहुत दरदाम वृद्धि पाई जीवो like बहुत बेसी तुम्हारा money will lose its value and then तुम्हारा this depreciation of money हवा right imports costly हे जीवो right it will be cycle complete right so anyways inflation is a separate chapter we discuss kariba types of inflation and all the measures we discuss kariba okay so
Inflation is general rising trend in the prices. The price rising trend is called inflation. And ଆମର as I told କିଛି ହଦ ତକ inflation ଭଲ but ବେଶୀ ବଢିଗଲେ it's a problem, right? ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବେଶୀ inflation ବଢିଯିବ as I told ତାର cascading impact ବହୁତ ଅଛି। ଆମର inequality ବଢିଯିବ, ଲୋକ savings ରହିବନି, ତାପରେ investment ହବନି, and ତମର depreciation, ତମର currency depreciation ହବ, imports costly ହେଇଯିବ, right? ତ ବହୁତ ସାରା ତମର cascading impact ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ এটা জরুরি কি ଆମେ ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করিবা, রাইট? যেতে ইনফ্লেশন হব we have to control that, that is required to stabilize the currency, as I told না তবে ইনফ্লেশন and currency র value is linked। যদি ইনফ্লেশন বহুত ଅଧିକ বଢିଯିବ ଆମର currency ବି depreciate ହେଇଯିବ, right? So RBI जो सेंट्रल बैंक ର रोल ହେଲା ଏଇଟା, it is one of the important role କି monetary policy ତାଙ୍କର they will control inflation, right, and stabilize the currency। तो कौन तमर फंक्शंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी आसुची हमरो प्राइस स्टेबिलिटी, राइट? जिनसर दरदाम ताको कंट्रोल करिवे, एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, राइट? खाली इन्फ्लेशन कंट्रोल करले हबनी, राइट? तम इन्फ्लेशन सबले कमेले हबनी, ग्रोथ भी दरकार, दीटा जिंस दरकार। बेसी दरदाम वृद्धि भी हबनी, प्लस इमिति नै कि पूरा तम बिल्कुल तम दरदाम वृद्धि कर देलनी, देन देयर विल बी नो ग्रोथ, राइट? देयर शुड बी ट्रेड ऑफ बिटवीन टू। तमरा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करिवार अछि, प्लस इमिति नै कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया बोली बिल्कुल हमें ग्रोथ को नेग्लेक्ट कर दवा कि जमारू विल नॉट अलाउ द प्राइस टू इंक्रीज, लोक माने इन्वेस्ट करिवेनी, जॉबलेसनेस हे जीवो, सिमिति सिचुएशन दरकार नै। ग्रोथ भी दरकार, प्लस प्राइस भी बेसी स्टेबिलिटी दरकार, प्राइस भी बेसी न बढ़िया करता। एक्सचेंज रेट स्टेबिलाइजेशन आई वाज टेलिंग यू, राइट? बेसी इन्फ्लेशन हेले तम करेंसी भी डिप्रिशिएट हे जीवा आबे। Then tomorrow balancing the savings and investment, right? So it should be the savings and investment should be there, right? So the amaro basic inflation वगैरह hela, then your savings will be drained, savings नथिल obviously savings will be your capital, right? तुम पैसा अगर save करिवो ताहले ताको invest करियो पारे, तो that should be there। Generating employment, again growth से related, and finally it will lead to ultimate तुम्हारा financial stability, right? Inflation बढ़िबो, depreciation होबो, दरदाम वृद्धि पाइबो, तो financial stability रहिबोनी। तो inflation control करिवो जदी, if you control the money supply, then all these things will be taken care of, right? तमरो price stability रहिबो, तमरो growth रहिबो, employment भी तमरो रहिबो, तमरो जो savings रहिबो, लोकंगर capital रहिबो investment पाई, right? So all these things, exchange rate तमरो control रहिबो, all these things will be taken care by monetary policy। मॉनेटरी पॉलिसी दी प्रकार होई पारे, गोटे एक्सपेंशनरी, गोटे कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी कोन करिवे, तो टोटल जो मनी सप्लाई को इंक्रीज करा हबो, राइट? सो केतोले इंक्रीज करा जिवो, तो जेतेबेले तमरो मार्केट रे पैसा कम थिवो, माने देयर विल बी ए डिफ्लेशन, बेसी पैसा मार्केट लोक मान नथिवो, राइट? सो एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी कोन करिवो, तमे रिलैक्स कर दबो, इंटरेस्ट रेट को बहुत कमे दबो, लोक इजीली लोन नेबे, जो मार्केट रे मनी सप्लाई बढ़िबो, राइट? एक्सपेंशनरी केतोले हुए, जेतोले डिफ्लेशन थाए। डिफ्लेशन माने लोक माने बाइंग पावर न थाए लोक पाखरे, राइट? सो एक्सपेंशनरी कोन दरकार, जदी बेसी लोक में पैसा नहीं, ग्रोथ हबनी, इन्वेस्टमेंट हबनी, ग्रोथ हबनी, एम्प्लॉयमेंट हबनी, राइट? तो ए माने कोन करे ना, एते इंटरेस्ट रेट को कम कर दियंती कि मार्केट रे मनी सप्लाई बढ़ाई दियंती, लोक में पैसा आसीबो, लोक में इन्वेस्ट करिवे, ग्रोथ हबो, एम्प्लॉयमेंट हबो, सो your deflation will be countered। तो ताको एक्सपेंशनरी तमरो मॉनेटरी पॉलिसी को जाय। कॉन्ट्रैक्शनरी कोन द ऑपोजिट, तो लोक में बेसी बाइंग पावर अछि, बेसी मार्केट रे पैसा अछि, तो कमेवर अछि, तो वी हैव टू डिक्रीज द टोटल मनी सप्लाई, हियर डिक्रीज करिवो, इडी इंक्रीज करियो मनी सप्लाई, डिक्रीज करिवो, राइट? तो डिक्रीज करले कोन होबो, देन माने तमरो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाई दबो, लोन दबा जो इंटरेस्ट रेट को जदी पूर्वरु 5% थिला 10% कर दबो, तो 10% हेला आगो लोक लोन नेबे कि इतने पे ना, अब हाउस लोन तो नबो ना, कार लोन तो नबोनी, और इट वाज 5% में भी तमे नहीं जीवो कि 5% अछि, कम अछि नहीं जीवी, राइट? तो ए बेला मार्केट में मनी सप्लाई आपे कमी जाए, एंड दिस इज टू काउंटर इन्फ्लेशन, करेक्ट? सो आको कोंती तमरा डियर मनी, राइट? आको कोंती चीप मनी, राइट? बिकॉज़ मनी हियर इज चीप, बहुत सस्ता तमे मनी को दोजो, बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, तो इट इज चीप मनी। एडे मनी हैज बिकम डियर बिकॉज़ यू आर like a lot of interest अधिक अछि तमर।
अच्छा जो कहते एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी तमरो टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ डिफ्लेशन अछि इकोनॉमिक ग्रोथ आनियर अछि तमे एक्सपेंशनरी करिवो कॉन्ट्रैक्शनरी द मनी पॉलिसी कते करिवो तो टू रिड्यूस द प्राइसेस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पे तापर मनी सप्लाई था जनरल मनी सप्लाई रो मेजर हमें M1 M2 M3 M4 ए चारटा ये रे करू सो व्हाट इज M1 सो M1 इज योर इट इज कॉल्ड नैरो मनी सो एटा कोन तमर जो करेंसी हेल्ड विथ द पब्लिक जति कि टंका लोक पाखर अछि माने हाथ रे हार्ड कैश अछि ताकू छाड़ी गिरी द डिमांड डिपॉजिट with the banks what is demand deposit demand deposit hela tamara savings and current ako demand deposit kain kohndi because any time you demand तुम बैंक को दबा पड़िबो राइट मोर सेविंग्स बैंक रे पैसा अछि माने करंट बैंक मो काली इच्छा हला मु सब पैसा काढी परिबी जे एट माय ओन विल मु पैसा काढी परिबी तो काको डिमांड डिपॉजिट कहंदी राइट इट इज लिक्विड लिक्विड माने बुझछो केबे भी डिमांड माने आको नहीं पारंती लोको राइट सो दीटा लिक्विड यू सी द करेंसी हेल्ड विथ द पब्लिक लिक्विड राइट लिक्विड माने बुझछो तो जोडे इजीली तमर कन्वर्ट करी हो करेंसी को इजीली तमर ताको एक्सचेंज करी हो दैट इज लिक्विड राइट तमर जेमिति जागा इज नॉट लिक्विड राइट तमर जागा की घर हे गला इट इज नॉट लिक्विड इट टेक्स टाइम तमे लोक की ओडे एते टका किने पाइबो बहुत सारा फॉर्मेलिटीज हबो तापर जाई तमसे पैसा पाइबो हठात पाइ परिबोनी किंतु मो सेविंग्स अकाउंट रे पैसा अछि मो सैंक्शन दरकार पड़ला मो सैंक्शन गली बैंक रे पैसा डिपॉजिट करके माने पैसा विथड्रॉ करके आन देली राइट तो योर सेविंग्स बैंक अकाउंट हे गला कि करंट बैंक अकाउंट हे गला और योर जो करेंसी तुम पर हार्ड कैश अछि दिस इज योर लिक्विड और अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई आरबीआई भी बहुत सारा बैंक रो तमरो डिपॉजिट हेल्ड करता है तमरो लाइक विल सी बहुत सारे रिजर्व्स लाइक सीआरआर एसएलआर काफी इंस आरबीआई भी हेल्ड करे अगेन दैट इज आल्सो लिक्विड बिकॉज़ बहुत सारा तमरो जेमिति सीआरआर एंड कैश और गोल्ड रे होल्ड करे राइट तो अगेन दैट इज आल्सो लिक्विड तो ए तीनटा मिसे की तमरो हुए नैरो जो M1 व्हिच इज कॉल्ड नैरो मनी अरे व्हाई नैरो नैरो माने हम जस्ट कंसीडर करछु ओनली लिक्विडिटी जो लिक्विड कैश को राइट इजीली जोटा कन्वर्टेबल माने हमर सेविंग्स अकाउंट पैसा हो करंट अकाउंट पैसा हो कि हार्ड कैश हो कि जहा अलगा सुना कैश अछि आरबीआई पाखरे तो दिस इज लिक्विड इजीली कन्वर्टेबल तो ताको हम नैरो मनी को जेतु अलगा अलगा किछि मनी हमें जो इन्वेस्टमेंट वगैरह किछि बेटे एफडी आरडी वगैरह किछि कंसीडर करूने तो इट इज नैरो राइट बट इट इज द मोस्ट लिक्विड राइट इट इज मोस्ट लिक्विड M2 टा कोन सेही M1 जो नैरो मनी थिला ताकू ता सहित तमरो पोस्ट ऑफिस रो सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट राइट अगेन दिस इज आल्सो लिक्विड M1 and M2 both are liquid राइट सो एटी तमरो M1 थिला जोटा हाईली लिक्विड प्लस एटी तम खाली बैंक रे कंसीडर करथुलो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट कंसीडर करनथुलो एटी तम पोस्ट ऑफिस रे भी देखो तमे डिमांड डिपॉजिट तमरो डिमांड डिपॉजिट कंसीडर करछो सेविंग्स डिपॉजिट कंसीडर करछो सेविंग्स डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस करंट अकाउंट न था तो करंट हमें लिखिने ओनली टे सेविंग्स अकाउंट लिखी छे हमें ओके बुझियोस ना बुझियोनी Yes, sir. बुझियोस ना बुझियोनी यस सर पक्का Yes, sir. पूरा क्लियर एते खामोशी रहले भी है ना ये डाउट लगुच सरला पर क्वेश्चन पछारी होला मजे मजे ओके सो सेकंड हां सो M1 हैला M2 हैला M1 M2 कोन इट्स अगेन लिक्विड but less than your M1 so एट तमर कोन रहइबो इट विल बी M1 जो पूरा हमर करेंसी अछि कि हमर डिमांड डिपॉजिट बैंक्स अछि एंड हमर आरबीआई डिपॉजिट अछि आरबीआई कैश एंड जहां भी डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट अछि आरबीआई रो एंड प्लस खाली गोटे एक्स्ट्रा आसी गला डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस ओनली सेविंग्स अकाउंट आसीबो बिकॉज़ करंट अकाउंट पोस्ट ऑफिस न थाए ओके तो M2 हे गला देन M3 कोन M3 is something different M3 is called broad money कहीं की एथरे पूरा मनी हमें कंसीडर करछु जति की पैसा अछि लाइक जति पैसा नो खाली पोस्ट ऑफिस छाडी करी विल सी सो इट इज M1 M1 is your
cash, demand deposit plus your it is time deposit भी पड़े असला इधर. Time deposit with banks, है ना? Time deposit only with banks. What is time deposit? What is time deposit? Sir, fixed Time deposit. deposit. Why it is called time deposit? Fixed deposit को. Fixed deposit a ତ particular time maturity ହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା पर्टिकुलर टाइम Exactly. ଗୋଟେ particular time duration ଥାଏ. ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା କି 4 ବର୍ଷ, right? ତାପରେ mature ହୁଏ. Right? ସେଇ time ପୂର୍ବରୁ generally ଲୋକ କାଢିବେନି because there will be penalty. ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ କାଢିଲେ you will not get the benefit. So generally ଲୋକ କାଢିବେନି. ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ investment କରୁ LIC वगैरह ଯାହା ବି like anything FD वगैरह ଯାହା ବି କରୁ we generally honor the time period 5 years 4 years ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ honor କରୁ. ତା ପୂର୍ବରୁ there is very less risk କି ଲୋକମାନେ penalty ଦେଇକି ତାକୁ withdraw କରିବେ. Right? So this is ଟିକେ safe. Right? Bank ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ tension ନାହିଁ କି ହଠାତ୍ ଏ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ. Right? ସେ ପଇସାଟା they can invest somewhere else. Right? For higher returns. तो এই পয়সাটা भी এতে include ହେଇଗଲା. Right? Apart from your demand deposit and cash ଯାହା ବି ଥିଲା ଏଇଠି ବି ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ର even time deposit ମାନେ FD RD ଏଗୁଡା ବି add ହେଇଗଲା. That's why it's called broad money. Right? କାହିଁକି this is almost complete money. This is not only your hard cash. ଖାଲି ଆମେ cash ଆଉ savings ପଇସା କହୁନେ. ଏଇଠି ଆମେ even ଯାହା FD RD ଯୋଉ ଅଛି right ତ ସେଇଟା ବି କହୁଛେ. Correct? ବହୁତ ବଡ amount ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ignore କରିଦଉଥିଲେ ଏବେ ସେଇ amount ବି ଆମେ add କରିଦେଲେ. This is a broad money. And generally this is the most common measure of money supply. ଆକୁ ହିଁ consider କରାଯାଏ. Right? M4 ଟା କଣ same M3 related broad money related but ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ broader. କାହିଁ ଆଉ ଟିକେ broader? ଏଇଟା ତମର पोस्ट ऑफिस रे भी डिपॉजिट गुडा भी तम कंसीडर होची पोस्ट ऑफिस रे भी जहां भी तमरो एफडी वगैरह अच्छी राइट ऑल दोस थिंग्स आर आल्सो कंसीडर हियर तो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट भी कंसीडर हे जाउची योर डिमांड डिपॉजिट सेति में एको को जाउची M4 राइट सो M1 and M2 are short of narrow money M3 and M4 are short of broad money now can you tell me सबुटु बेसी लिक्विड कोडा which is सबुटु बेसी लिक्विड and which is the M1. least liquid M1 sir M1 M1 is the most liquid, right? Because it is our ready cash ହେଇଗଲା then ଆମର savings ହେଇଗଲା ତ ଆରାମ ସେ ବାହାର ପାରିବ and M4 is the least liquid, right? And which is the like commonly used measure for money supply in the market? କୋଉଟା M1 M2 M3 M4 ଭିତରେ କୋଉଟା commonly market ରେ ଆମେ use କରିବା to like calculate the total money supply M3, right? M1 ଟା କେମିତି M1 ଟା କେମିତି ମନି ସପ୍ଲାଇ ରେ କଣ ତମେ ତମର ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ଅଛି ତାକୁ କନସିଡର କରିବନି ପାଖରେ ତ ଲୋକ ଭାଇ କମ ପଇସା ଦଉଛି ପାଖରେ ତ 500 ଟଙ୍କା ପଡିଥିବ 500 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଏମିତି ପାଖରେ ପଡିଥିବ ଅସଲ ପଇସା ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଖିଥିବ ତମେ ତ ମନି ସପ୍ଲାଇ ଟା ଆମକୁ ସେଭିଂସ ବାଲା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଭିଂସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ସେଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଓକେ ठीक अच्छे तो दिस इज मनी सप्लाई तो हमें फर्स्ट देखले मॉनेटरी पॉलिसी कौन मॉनेटरी पॉलिसी है तमरो जो मार्केट रे मनी सप्लाई को कंट्रोल करिवा काहे कंट्रोल करिवा दीटा रीजन पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पे ग्रोथ पे राइट दिया मेन हमर इंटेंशन इन्फ्लेशन ग्रोथ राइट सो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई जो तमरो मनी सप्लाई तमरो कंट्रोल करची फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड फॉर इन्वोकिंग और इंक्रीजिंग ग्रोथ राइट अब मनी सप्लाई कौन हम देखिले M1 M2 M3 M4 देखिले मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई M1 इज द नैरो मनी M2 वाला ताटू टिके नैरो बट नैरो टू टिके आउ टिके अधिक अधिक पोस्ट ऑफिस रे सर्विस भी ऐड कर देले सेमिति M3 वाला हम ब्रॉड मनी M4 आ टिके एक्स्ट्रा पोस्ट ऑफिस रे भी हमें डिपॉजिट ऐड कर देले now let's see the monetary policy tools कौन-कौन सब tools अछि RBI रो to control like your money supply so there is something called liquidity adjustment facility right तो रेपो रेट नेगिरी माने तमरो कंट्रोल करे दिस इज द लाइक सबुठ बेसी तमरो व्हाट यू कॉल प्रचलित राइट दिस इज द लाइक वन मेनली यूज्ड so LAF liquidity adjustment facility then there is something called marginal standing facility this is something rare right
this is kind of penalty wala gote achi, we'll see study about that. तो liquidity adjustment facility ହେଇଗଲା, marginal standing facility ହେଇଗଲା, bank rate ହେଇଗଲା, reserve rates ratios ହେଇଗଲା, ତମର standing deposit facility ହେଇଗଲା, open market operation ହେଇଗଲା, then there is something called quantitative easing ହେଇଗଲା, right? Forex market रे intervention କରିକିରି, then moral suasion, right? So basically na monetary policy tool ଦି ପ୍ରକାରର ଅଛି, right? ଏଟା ସବୁ mix କରି ଲେଖି ଦେଇଛି, କହି ଦଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ quantitative और वाला qualitative. Quantitative टा कौन? So quantitative will be actually increasing or decreasing the rate, some sort of rate को तमें increase decrease करिवो, right? तम जो पैसा lend करछो माने market रे किंबा market रे उठाउछो, तो you will actually control the money supply, right? By varying the rates or interest rate तमरो vary करिकी तमे you will actually control the lending rate जो loan दिया जाउची, and you will control the money supply. This is quantitative measures, right? तो हमारे LAF हेगला, MSF हेगला, हमारा bank rate हेगला, reserve ratios हेगला, open market operation हेगला, right? Is everything और they are your quantitative. Qualitative कौन? Qualitative, you are not actually controlling the money supply and directly तमें control करना by changing the rates and all, but by using some other means, right? Like moral suasion, we'll come to that. Moral suasion माने तमे बैंक मानको तमे ताको जो धमकी देकिरी ये करिकिरी आरबीआई जो बैंक मानो कंट्रोल करे ताको अथॉरिटी ताको वार्निंग दिए एती टाइम भीतर करो एंड ऑल, तो बाय माने भलो वे हो डिप्लोमेटिक वे रे हो कि ता धमकी देकिरी जे भी वे रे तानु कामडा आदाय करंती, तो मॉरल सुएशन हेगला. देन समथिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड तमरो मार्जिन कंट्रोल, विल कम टू दैट. मार्जिन कंट्रोल लिखी नहीं थे. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मार्जिन कंट्रोल. देयर आर, these are qualitative, right? We separately study both, right? तुम जान दो कोटा क्वालिटेटिव कोटा क्वांटिटेटिव. Now first देखियो हमरो liquidity adjustment facility. So what is liquidity adjustment facility? Sometimes तमरो जो बैंक गुडा अछि तांको पैसा दरकार, शॉर्ट टर्म पे तांको पैसा दरकार था, right? For like anything, it may be ସେମାନେ जो रिजर्व मेंटेन करछंती, sometimes नाही, right? से रिजर्व नथिले तांको फोर्टनाइट रे वंस चेक हुए तांको यदि जो will come to the reserve SLR and CRR उसला मेंटेन करना, they will have to pay penalty, right? तो एबा किछि भी रीजन तांको हठात तांको पैसा दरकार पड़ पड़े शॉर्ट टर्म पे, राइट? 10 दिन पे दरकार पड़ला, 5 दिन पे दरकार पड़ला, दे माइट नीड मनी, राइट? सो एई पैसाटा ସେମାନେ आरबीआई ठू उठेई परिबे. ओके, आरबीआई गोटे रेपो रेट फिक्स करछि कि द बैंक्स कैन like borrow money for a short term from the RBI. Okay, so this is RBI. এটা হলো ଆମର ଯାହା ବି scheduled commercial banks ଗୁଡା ଅଛନ୍ତି, right? So they can get money from RBI ନେଇ ପାରିବେ with a repo rate. ଗୋଟେ repo rate ରହିବ ଗୋଟେ percentage ରେ they can borrow money, right, from RBI. So ଆକୁ କୁହନ୍ତି liquidity adjustment facility, କାହିଁ ଏଇଟା ତମର short term ପାଇଁ ଏଠି ନିଅନ୍ତି for repo rate. So I'll show you. So the banks need liquidity to meet their daily mismatches between need and availability. They need some money short term pay. RBI helps them with a limited amount on a short term through liquidity adjustment facility, right? So short term पे ताको lend कर परिबो against तमरा collateral government security. काहे कि ए जो लोन दबो किमित दबो रेपो रेट रे कोन collateral रहइबो, so there will be something government securities. गुट्टे सेकंड हाँ, the government security कौन? What is this government security? ठीक है, सही concept को पढ़ेगा, then we'll come back. What is government security? सर एलआईसी बॉन्ड ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡା. LIC तो नुह. So what is government security is तमरा generally government को मझे मझे पैसा दरकार, right? For various reasons. Government might need money. Sometimes government uses this government security to actually control liquidity as well. जहाँ भी तो government को पैसा दरकार, तो government sometimes कौन करे ना, RBI through रे government security float करे, right?
तो that will be your like government bonds, पूरा government ये ରହିବ sovereign bonds। तो सेଗୁଡାକ ତମର बैंक माने नियंती, राइट। କିଛି ତ SLR ରେ ନିୟନ୍ତି, we will study about that। SLR ରେ କିଛି government securities ନେଇ ପାରିବେ because they have to maintain certain no open market operation ଆମେ ଆସିବା, open market operation ଆସିବା। so ତମର ଏବେ डिस्कस करिया, we will come to that ହେଲା। तो ଏଇ जो government securities गुडाक तमरो बैंक माने नियंती, राइट। सम SLR रे नियंती, आ କିଛି କିଛି तमरो हां जो तुम कहले ओपन मार्केट ऑपरेशन सेरे तमरो किनंती, राइट। सो दिस इज व्हाई से माने किनंती, गोटे गोटे किछ तो मैंडेटरी होला SLR रे, आ गोटे बेले बेले जो आइडल मनी अछि जोटा से माने कोठी भी लेंड करनांती पाखरे पड़ी छि बैंक रो, कोन करिवो तो गवर्नमेंट सिक्युरिटी किन देला, किछ ना किछ तमको इंटरेस्ट मिलिवो, राइट। सो एई बेले गवर्नमेंट सिक्युरिटी थाए, किछ किछ SLR कोटा रे थाए, SLR इज मैंडेटरी। आ किछ किछ एक्स्ट्रा से माने ओपन मार्केट ऑपरेशन किनि थांती, विल कम टू दैट व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। फॉर नाउ जाना आ किछ किछ एक्स्ट्रा किनि थांती, तांको जो आइडल मनी रखिछन पाखे जेटा पड़ी की अछि ताको इन्वेस्ट कर दियंती गवर्नमेंट सिक्युरिटीज रे, राइट। सो सेई गवर्नमेंट सिक्युरिटी तांपे थिबो, बर्तन सेई गवर्नमेंट सिक्युरिटी से आरबीआई के कोलेटरल भाबे देबे, राइट। जति लोन नेबे दे हैव टू गिव गवर्नमेंट सिक्युरिटीज। गुड सेकंड कोन होला हैंग गेला बोले, गुड सेकंड 1 मिनट हैंग गेला। ଭାଇଲେ ओके, तो बेसिकली जो शॉर्ट टर्म में तांकर जहां भी मिसमैच आछी, जहां भी तांको पैसा दरकार, तांको लिक्विडिटी दरकार, सो दे विल टेक इट फ्रॉम आरबीआई। अरे कोन पैडा इन होउछ, राइट। scheduled commercial banks they will take from RBI, right, and in exchange से माने देबे गवर्नमेंट सिक्युरिटीज कोलेटरल भाबरे एंड रेपो रेट रे तांको लोन दिया जिवो। व्हाट इज द रेपो रेट करंटली ऑनगोइंग, रेपो रेट केते चलछि एबे, रेपो रेट केते ଏଟା चलछि 50 सर 6.50 केते 6.5 6.5 एम आवर 6.5 रेपो रेट अछि, राइट, करंट रेपो रेट। तो एटा प्रति लाइक तमरो 2 मंथ्स वंस रे आरबीआई तमको चेंज करे, राइट, आको रिवीजन करे प्रति 2 मंथ्स वंस रे तारंगर लाइक दिस मॉनेटरी पॉलिसी तांगर रिव्यू हुए एंड से माने रेपो रेट को तमरो चेंज करंती, राइट, बाय मंथली। सो रेपो रेट रे तमरो बैंक को लोन दिया जाए एंड देन जी 6 तार कोलेटरल निया जिवो, राइट। देन समथिंग कॉल्ड रिवर्स। हां को सर रेपो रेट ସବୁବେଳେ କଣ ପାଇଁ ରିଭର୍ସ ରେପୋ ଅଧିକା ଥାଏ? बुझिलानी कोन ରିଭର୍ସ हला ରେପୋ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମର ରେପୋ ରେଟ୍ ଟା 6.5 ଅଛି ନା, ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ଟା 3.5 ଅଛି, ସେଟା ମାନେ ରେପୋ ରେଟ୍ ଟା ରିଭର୍ସ ରେପୋ ରେଟ୍ ସବୁବେଳେ ଅଧିକା କଣ ପାଇଁ ଥାଏ? रिवर्स टा अधिक तम थाए, रिवर्स कम थिबो ना। ନାଇଁ ନାଇଁ ରିଭର୍ସ ଟା କମ ଥାଏ, ରେପୋ ଟା अधिका ଥାଏ, ସେଟା କଣ ପାଇଁ ଥାଏ? अरे दैट्स द रूल ना, दैट्स द रूल। रिवर्स ଓହୋ। 3.5 नथिबो, तार 0.25 की 0.5 कम थिबो। रिवर्स एपटे टाइप केते अछि रिवर्स अच्छा, रिवर्स एते कम 6.25 रखछथि 3.35 अछि। 2.5 जनरली बाय रूल ସାର୍ हला तमरो 0.25 0.5 कम थाए। कोन ताकर ओदे चेंजेस करथिबे ताकर को रीजन जगो। अच्छा मु तो एक्सप्लेन कर दोछि काहे रिवर्स रेट कम थाए। तो दिस इज रेपो रेट। आरबीआई एटा फोपड़ देबे कि काम करनी एटा कोन। सर बर्तमान सर रिवर्स रेपो रेट तो 6% अछि ना कोन सर?
ନା 3.35 ଦେଖଉଛି 3.35 ଦେଖଉଛି। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ରେ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କାମ କରୁନି। ଏଇଟା ରେପୋ ରେଟ୍ ହେଲା ରାଇଟ୍। ସୋ ରେପୋ ରେଟ୍ ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଉ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଲିକ୍विଡିଟି। ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଲୋନ ଦଉଛ ସର୍ଟ ଟର୍ମ, ସପୋଜ ଦେयर ଇଜ ଇନଫ୍ଲେସନ। ଇନଫ୍ଲେସନ ମାନେ କଣ କରିବା ଅଛି ତମକୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଣ କରିବା ଅଛି ତମକୁ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଆକ୍ସନ? ଇନଫ୍ଲେସନ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଅଧିକ ଅଛି, ତମକୁ ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅଛି, କଣ କରିବ? रेपो रेट इंक्रीज करियो ମାର୍କେଟରୁ ମନି ସପ୍ଲାଇ କମେଇବ। କେମିତି କମେଇବ? କେମିତି କମେଇବ? ତମେ ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ଟା ଇନକ୍ରିଜ କରିଦେଲ, ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋନ ଦଉଛ ତମେ 6% କାଲି 8% କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ କମ ନବ। କରେକ୍ଟ? ଦରକାର ପଡିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଦେଖିଚାହିଁ ଲୋନ କମ ନବ। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମରକୁ ଦବ, ସିଏ ବି ଏବେ ଯଦି 10% ଦଉଛି 12% କରିଦେଇଥିବ। ରାଇଟ୍? ଆରବିଆଇ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢେଇଲେ ସିଏ ବି ତାର ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ଲୋନ ଦଉଛି ରେଟ୍ ଟା ବଢେଇ ଦେଇଥିବ, ହାଉସ ଲୋନ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍। ତ ଫାଇନାଲି ଲୋକମାନେ ବି, କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଲୋନ ନବା କମେଇ ଦେବେ। Right? This is how the liquidity in the market is controlled and inflation will be controlled slowly। लोक पाखरे जो पैसा ଟିକେ କମିଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଲୋନ ନେଇ ପାରିବେନି, ଏତେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହବନି, and your inflation will be controlled। Okay, so this is your repo rate। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି डिफ्लेशन ଅଛି ମାର୍କେଟରେ, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ନାହିଁ, ଗ୍ରୋଥ ଦରକାର, ତ ଇଏ ରେପୋ ରେଟ୍ କୁ ବହୁତ କମେଇ ଦେବେ। ରେପୋ ରେଟ୍ କମେଇ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋନ ନେବେ, ଘର ବନେଇବେ, ଲୋକମାନେ ଲୋନ ନେଇକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପକେଇବେ, ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଗାଡି ମଟର କିଣିବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତମର ଯୋଉମାନେ ଘର ବନଉଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ଆସିବ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖେ ପଇସା ଆସିବ, ଗାଡି ବନଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କର ପାଖେ ପଇସା ଆସିବ, ମାଲିକ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିବ, ଯିଏ ନୂଆ ବିଜନେସ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଲାଇକ ଦେ ୱିଲ୍ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଂ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନ୍ୟୁ ଭେଞ୍ଚର୍ସ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହବ, ଗ୍ରୋଥ ବଢିବ, and your money supply in the market will be increased, and ତମର deflation ବି control ରେ ଆସିଯିବ। करेक्ट? सो एटा तमरो जनरली रेपो रेट यूज करंती। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट कोन? बदन आरबीआई उठेबो बैंक मानकठू। ओके, तो आरबीआई तमरो बैंक मानकठू उठेबो पैसा again, and again it will be via your this जो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अच्छी, जो G6 अच्छी, तो सेटा ही तमरो करा हबो। एंड हियर व्हाट आरबीआई डज इन रिवर्स रेपो, इट परचेसेस, राइट, तमरो दिस जहां जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी ताका अच्छी ताको रीपरचेस कर दबो। राइट? बैंक्स पाकर ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अच्छी, धरो ता पाके 100 टा अच्छी, ये कोन करबो? रिवर्स रेपो से 50 टा किनी दबो। सॉरी, माने ताको देई कि तमरो लाइक ताकटू जो पैसा नब, राइट? सो ताकटू रीपरचेस कर दबो एटा, एंड ताकटू पैसा ताकटू नब। ओके, so again in this way using reverse repo also से liquidity control कर परियो, मतलब market liquidity absorb कर दोची, जहां भी ता need अच्छी प्लस market रू भी sometimes strategically भी use करिवो, right? Sometimes maybe reverse repo रे need आसी पारे, and sometimes जानि सुनी करिवो to absorb the excess liquidity in the market। Correct? So this is your LAF, right? Liquidity adjustment facility। Using your reverse repo rate and reverse repo rate, you can control the तमर liquidity in the market। repo rate केमिति करिवो? By increasing the repo you can like decrease the liquidity। ଯଦି repo rate को increase कर दबो, money supply कमी जिवो, liquidity कमी जिवो, inflation कंट्रोल आसी जिवो। सिम्पली decrease जदी कर दबो repo rate, market में money supply बढ़ी जिवो, तमरा deflation कंट्रोल आसी जिवो। राइट? रिवर्स रेपो रेट केमिति करिवो? इन्फ्लेशन जदी अछि तमे आकड़ो रिवर्स रेपो रेट रे तमे किनि परिबो सब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तमरा आनिगिरी, तमे लाइक यू विल कौन करिवो? तमे लाइक मनीष मार्केट टू पैसा सक कर दो, बिकॉज़ नाउ यू विल बी बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, राइट? बोरो करिकि तमे अगेन लिक्विडिटी सक कर दबो। सो यूजिंग रिवर्स रेपो रेट you can like and repo rate, in this way you can control the money supply in the market। okay, ଆଜ୍ଞା sir। so it is a liquid adjustment facility। then there is something called marginal standing facility। what is marginal standing facility? ना वर्तमान बैंक को दरकार आउरी पैसा दरकार पड़ पड़े, apart from your this liquidity adjustment facility, ताको आउरी क्रेडिट भी दरकार पड़ पड़े, राइट? मो कहया कथा हला बैंक पाखरे किछि किछि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अछि। ए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अछि बैंक पाखरे गोटे अछि एसएलआर कोटा रे, एसएलआर कोटा थिबो,
then SLR quota is mandatory. ଏଇଠାରୁ ତମେ କାଢି ପାରିବ ନାହିଁ, correct? SLR quota ରୁ କାଢି ପାରିବନି, and there will be something extra, SLR quota plus କିଛି extra ଥିବ, जो गवर्नमेंट पाखे बैंक पाखे जी सिक्योरिटी थिबो, कहला किछि SLR quota थिबो, SLR quota is mandatory, सर and एक्सेलर there will कोटा be था something, I'll come to that. It's a statutory our liquidity ratio, सर will come to that, कौन ପାଇଁ सेटा मेंटेन हुए ना, तो किछिटा तम तो माने बैंक पाखे रखिया मैंडेटरी एसएलआर वाला कोटा, देन देयर विल बी समथिंग एक्स्ट्रा, जो से ओपन मार्केट ऑपरेशन करी किनी थिबो एक्स्ट्रा तार जो आइडल मनी को इन्वेस्ट करथिबो, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रे ए एक्स्ट्रा को से माने इन्वेस्ट करथिबे, वर्तमान भाबो ए एक्स्ट्राटा सरीगला, तांको स्टिल पैसा दरकार, किंबा तां पाखरे नाही एक्स्ट्रा, से खाली एसएलआर ही रखचंदी, एक्स्ट्रा जमारो किछ किन नांदी, राइट? तो वर्तमान से कौन करिवे, तांको जो एक्स्ट्रा थिला सेटा सरी जाईची, सेटा ऑलरेडी से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रे सेटा देइकिरी पैसा उठीचंदी, तांको स्टिल पैसा दरकार, आ पैसा तांको एक्स्ट्रा नाही, किंबा तांको जमार एक्स्ट्रा नथिला ही, राइट? तो एबे वर्तमान से माने व्हाट दे विल डू, हाउ दे विल नाउ गेट द मनी, राइट? तो सेही पे गवर्नमेंट उठे करला मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, राइट? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रे कोन हबो ना, से माने स्टिल बोरो कर परिबे नाउ यूजिंग द एसएलआर कोटा, राइट? दो देयर इज सम लिमिट, राइट? तुम केते परसेंट तुम बोरो कर परिबो एसएलआर कोटा, एमिति नै कि पूरा ओपन बहुत किछ कर परिबो, बहुत बोरो कर परिबो सम परसेंट, बट नाउ दिस विल बी नाउ एट अ पेनल रेट, राइट? तुम एमएसएफ जो तुम रेट थिबो ना, इट विल बी हायर, इट विल बी जो गोटे जनरली पूर्वरु हमें गोटे फॉलो हुए, तो देयर विल बी रेपो रेट, there will be reverse repo rate, then there will be MSF, ହେଲା? तो जनरली कौन हुए ना, तुम्हारा रेपो रेट टू एमएसएफ टा अधिक था, राइट? 0.25 और 0.5, सेमिति तुम्हारा रिवर्स रेट टा तुम्हारा रेपो रेट टू कम था, सेम 0.25 की तुम्हारा 0.5 की 0.25, राइट? ए भले तुम्हारा था, राइट? तो एबे तुम देखुतिली रिवर्स रेपो रेट काफी माने ये कर देछ ना, दैट इज नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, तो एमएसएफ इज फॉलोइंग, एमएसएफ तुम्हारा 6.5 रेपो अछि एबे, 6.75 is your MSF, right? But reverse repo ideally it's 6.25 होगा था, right? But reverse repo they have done 3.35, तो मन ता माने कोन, बर्तन तक इन्फ्लेशन मते कंट्रोल करियार नाही, तांगु तांगु ना कोन आई डोंट नो, सी जमारो रिवर्स रेपो माने यूज करियो चाहू ना, ए को बैंक तांगु 3.35 रे काई पैसा दो, तांगु एते कम इयर काई दो तुमको, से पैसा तांगु काई दबो आरबीआई को, right? So reverse repo for some reason it will be very technical I guess, तो हमें जानी बानी, तो एते भितर हम दक्का नहीं जानिबा, but 3.35 तम रिवर्स रेपो रेट अब अछि, राइट? बट आइडियली इट शुड बी जति कि एमएसएफ तमर अधिक थाए, जति पोर्शन सेति माने लाइक 0.25 अधिक थाए एमएसएफ टा, आ सेमि तमर रेपो रिवर्स रेपो सेटा 0.25 कम थाए, दिस इज आइडियली फॉलोड, राइट? There will be some circumstances, technical तो जाननी, मे बी आई विल नेक्स्ट टाइम गूगल कर देखिबा कोन पे रिवर्स रेपो रेट तमरो 3.35 अच्छी, there will be some reason, like let's find out next time, ठीक अछि? This is your marginal standing facility. Marginal standing facility काहे कि ताको पेनल रेट ताको दवा पड़छि, because now they have not SLR रखि ना दी, से माने एबे सॉरी XLR कोटर से माने नवा चाहछन, they don't have extra now, SLR is something mandatory, SLR को तमे मेंटेन करबा ही करिया कथा, वर्तमान से मन पर पैसा नै, से माने कहछ हम SLR रो ही नबो, टिके हम SLR दे दियो, हमर पैसा नै, हम टिके क्रंच रे अछि, लिक्विडिटी क्रंच अछि, दे दियो, तो ए माने कहले भाई ठीक अछि, तू ने पैसा के असुविधा नै, तो क्रंच जा अछि ताको पूरा कर, बट तो एक्स्ट्रा तो इंटरेस्ट दवा पड़ियो, बिकॉज़ यू हैव नॉट, लाइक नाउ यू आर ब्रेकिंग दैट SLR रूल, राइट? So this is your marginal standing facility. Then bank rate टा कोन, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म, तमरो जदि आरबीआई लोन देला, राइट? सो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की एमएसएफ, दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म, किछि इंबैलेंस अछि कि शॉर्ट टर्म मिसमैच को ये करिया पे, भी लॉन्ग टर्म पे आरबीआई लोन देला को बैंक को, राइट? दैट विल बी एट बैंक रेट, okay? So nowadays it is not ebe RBI long term loan do nahi, right? Mostly now RBI is giving short term loans, right? So it is obsolete achi eta, so mostly now we have like after introduction of LAF and all, that is used, right? So long term loan do nahi, but tamara bank rate gotte use achi, ebe gotte use hochi, जो रिजर्व्स अछि ना, एसएलआर सीआरआर
CRR एगुडा को तुम RBI को माने बैंक्स गुडा मेंटेन करियर अछि फोर्टनाइट चेकिंग हुए एवरी 14 डेज तुम चेकिंग हुए कि तुमरो SLR CRR सब पैसा ठीक से अछि ना नहीं यदि एटा न मेंटेन करले ना सो दे विल बी गिवन वार्निंग फर्स्ट वार्निंग सेकंड वार्निंग राइट सो आफ्टर आई थिंक सेकंड वार्निंग समथिंग दे हैव टू गिव फाइन से फाइन टा केमि दिया जाय से पेनल्टी दैट विल बी एट बैंक रेट ए बैंक रेट तांको पर पेनल्टी पड़े जदि जति के अमाउंट्स मेंटेन करनांती सो दे हैव टू पे पेनल्टी यूजिंग दिस बैंक रेट राइट सो बैंक रेट रा आउ लॉन्ग टर्म ये पे यूज हो नाही right and mostly this bank rate is a penal rate right it's a penal rate तो एटा तमरो MSF से तो बराबर right MSF जो 6.75 अछि बैंक रेट भी तमरो 6.75 थिबो okay so MSF bank rate is used for long term borrowing but long term borrowing आजकल RBI दो नहीं RBI short term ही दोची LF रे और MSF रे तो वर्तमान एटा यूज होची only for your penalty यदि तुम SLR and CRR मेंटेन कोन पेनल्टी में यूज होची then there is something called MCLR right marginal cost of lending rate so what is this marginal cost of funds based lending rate so what is this बहुत ब्रीफली कहूँ एत भीतर टाइम पढ़िबेनी ब्रीफली कहूँ सो पूर्व कौन होतला ना एबे धरो तमरो किछि भी तमरो जो रेपो रेट तमे चेंज कलो रिवर्स रेपो रेट चेंज कलो व्हाटएवर माने मोस्टली रेपो रेट आई एम टेलिंग मु तम रेपो रेट जके चेंज कलो तम रेपो रेट मु कमे देली एबे बैंक वाला कौन करिया कथा अगर फाइनल जो से माने लोन दोसन कंज्यूमर को सेडे कमे दा कथा करेक्ट बिकॉज़ दे आर गेटिंग द बेनिफिट मु रेपो रेट को वर्तमान जदी 4% कर देली बट स्टिल they have kept the final loan at 10% then they are getting a lot of margin से बहुत सारा margin खाउचंदी right से माने तमरो right they are not immediately passing on the benefit to the final customer they are making profit right so पूर्वरु that system was there they were taking time for तमरो like changing the cascading the rate to the final customer right so तुम्हें RBI it was previously it was base rate right something benchmark तमरो rate थला ओडे I forgot that कौन BP कौन benchmark ओडे rate थला right ताकू चेंज करके MCLR कर देले तो MCLR कौन करिवो so MCLR will make sure कि तमरो RBI चेंज करू करू बिकॉज़ इट इज ना आई थिंक एवरी डे एटा चेंज हुए तमरो एवरी डे तमरो जहां RBI कर आसी RBI तमरो एवरी 2 मंथ्स करिवो तो ये संगे संगे जहां भी तमरो चेंज होबो बेस्ड ऑन दैट इट विल रिफ्लेक्ट RBI तमरो रेपो रेट चेंज करला माने कमे लागी बढ़ेला माने तमरो संगे संगे तमरो इवन इंटरेस्ट रेट तमरो वेरी करिवो पूर्वरु एते इजीली से माने वेरी करू नथिले right but now they have this marginal cost of funds based lending rate right पूर्वरु there was something called base rate thila right there was something called benchmark rate and base rate so kon thila base rate and benchmark rate well different systems thila right so taku replace kari ke asgala MCLR MCLR will ensure ki tamaro jo this monetary policy transmission mane RBI tamar repo rate change kala and final rate jota customer pauchi immediately cascade hobo आज इधर RBI चेंज कला काली तमरो इवन कस्टमर विल गेट द बेनिफिट दिस इज योर MCLR राइट अब ऐसे भीतर जो दरकार नहीं राइट डिटेल अछि बट वी विल ओनली study the concept then reserves right they have various reserves so there are various reserves like we have SLR and CRR right so कौन दरकार माने रिजर्व माने कौन गेलो like you will keep some fraction right of the total deposit जति अछि बैंक रो right your demand deposit and your जो तमरो the demand and तमरो कौन देखो time deposit right so whatever deposits you have total deposit demand and time deposit तार किछि उडे fraction किछि उडे तार भाग आमे RBI पे रखिबा why it is required can you somebody tell me कौन पे दरकार why we need to keep some amount to the RBI काई रखिबा why we need to keep some money with Sir, RBI functioning of the bank in lending and borrowing money supply. functioning of अरे the bank RBI पे रखिबा निजे पे रखिबा तम तो अरे lending borrowing मनी करिबा सप्लाई को कंट्रोल करिया पई सारे गोटे बैंक तार कैश किछि रखे होछि RBI पाखरे
बाबा ସେଇଟା बैंक main आरबीआई reason, रे अछि ସେଇଟା main reason ନୁହଁ ନା। अच्छा इन्फ्लेशन ताको रिड्यूसिंग करिया ପାଇଁ कि इनक्रीजिंग करिया ପାଇଁ सेटा रीजन ठीक अछि ତମେ କଣ ଦେଖୁଛ ତମ ରେପो ରେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତମ କଣ ପ୍ରତି ଇନଫ୍ଲେସନ ବେଳେ ତମେ ଦେଖୁଛ ତମର ଏସଏଲଆର ସିଆରଆର ବଢଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏସଏଲଆର ସିଆରଆର ତମେ ବହୁତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଥିବ। You will not see SLR CRR changing very frequently. ସେମିତି ତାର ବ୍ୟାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ତାର ବ୍ୟାଙ୍କର କଣ? ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଉଛି। ଫଙ୍କସନିଂ ତ ସେଇଟା ହବନି ସାର୍। ଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ କଣ, ତମ ସେ ପଇସା ତମେ ଲେଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନ ସେ ପଇସା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ତମର ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ରହିଲା, ତମକୁ ସେ ପଇସା ଆରବିଆଇ ଦବନି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, କଣ ଲୋନ ଦବା ପାଇଁ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫଙ୍କସନିଂ ସେଟା ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। ଆରବିଆଇ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି କରିଦେଇଛି ଭାଇ, ତମର ଏତିକି ଅଛି ମାନେ ତମେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ସିଆରଆର 3.5% କି ତମର 18% ତମର ଏସଏଲଆର ତମେ ରଖ ଏଇଠି, ରାଇଟ୍? 18% କି 20% ତମେ ରଖ, ରାଇଟ୍? କଣ ପାଇଁ ମାନେ ରଖା ହଉଛି ସେଇଟା? ଏଇଟା କିଛି କାମରେ ଆସିବନି, ଏଇଟା ତମେ ଲେଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବନି। अरे देयर इज समथिंग कॉल्ड बैंक रन, राइट? तो लाइक तमरो बैंक बुडी न जाऊ, कस्टमर पैसा बुडी न जाऊ। काल सकाळे जदि बैंक पूरा पैसा बुले दे, भाबो मो पाखरे 1 कोटी अछि, मु लोभरे आसी 1 कोटी बुले देली पूरा पैसा। काली सकाळे जे डिपोजिटर आसी मते पैसा मागिबो कि भाई पैसा दियो, मु कहबो किछि नै, पैसा बुलेइछि रुह, से फेरी के आसु, मोर माने माने मिलु पैसा फेरस्त मिलु, मु तमु पैसा देबी। से बैंक रे भरोसा रहइबो कि? लोक से बैंक छाड़ देबे, कहबे कि नाही, राइट? अरे जदि आरबीआई कंट्रोल किछि पैसा न रखिला काली सकाळे, ए माने पूरा मूଳ पोछ कर देबे ना, पूरा पूरा पैसा रे माने बुले देबे, तमर जाईकरी बाहर लोन दे देबे, राइट? फॉर दैट, टू यस सर। प्रिवेंट बैंक रन, आरबीआई मेक श्योर किछि फ्रैक्शन ऑफ पैसा निज पाखे रखियो, राइट? ताकि पूरा पैसा से न बुले परंतु, राइट? प्लस देयर इज समथिंग तमर इवन बासल नॉर्म्स भी अछि, तमे केते तमर केते तो मेंटेन करिवो, लाइक cash if you want to, so that is a secondary thing, but very crude level na ame एटा कहबा बैंक रन को प्रिवेंट करिया पे, राइट? तमरो आरबीआई मेक श्योर करे किछि पोर्शन ऑफ द पैसा आरबीआई पे थाउ, सबुडा से माने लोन रे न बुलांतु, राइट? So these are your reserves. These are two types. There is one is called SLR and there is CRR. तो SLR रे कोन कोड वाला, so SLR, it's a portion of the time tamara and the tamara demand deposit, both the time and demand deposit that should be kept in the RBI, tamara RBI approved liquid assets like government securities, cash and gold, right? So देखो तमरे government securities, cash and gold tamara SLR रे रहुची, so there will be G6, cash and gold. Then there is something called CRR. So CRR रे कोन आसीबो? CRR रे there will be more liquid, so there you have to keep only liquid tamara cash and your gold, right? तुम अलगा गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटी रख परिबनी, राइट? अलगा लिखा है, हम डिटेल लिखबानी, खाली हम देखिदवा 40% आर लिमिट, राइट? पूर्व बहुत अधिकार होतला एक्चुअली, बिफोर like your 1991 it was very high, right? Around तमरो 40% पाखा पाखी तम एसएलआर रहउतला, जहा द्वारा कि तम लैंड एते पैसा करि पाउ नथले, बहुत असुविधा होतला। एबे ताको कमे दिछन, एबे लाइक विल मोस्टली हैव योर 18 to 20% हमर एसएलआर हमर रहउची, राइट? सो हाँ, so like but the maximum limit ला तुम्हारा 0 to 40%, by rule 0 to 40% तुम्हारा maximum rule vary कर परियो, correct? And SLR has your cash, gold and तुम्हारा जो G6 तुम्हारा रहिबो government securities and government approved other जहाँ भी तुम्हारा as अच्छी, right? Whatever government securities and other treasury bills and all whatever approved by the government, okay? CRR कौन? CRR again it is अच्छा आउट जिंस एसएलआर रे तुमको इंटरेस्ट मिले, एसएलआर रे जहां पैसा रखियो यू गेट इंटरेस्ट, आरबीआई इंटरेस्ट दिए। सीआरआर कौन? सीआरआर रे यू कीप इट इन गोल्ड एंड योर कैश, राइट? सो एटे तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखिबनी, राइट? सो एटे यू विल हैव को लिखा छी तो एटे तुम जस्ट मन रखो, एटे तुम रख परियो कैश रख परियो एंड तुम गोल्ड रख परियो, ओके? फॉरेक्स वगैरह रख परियो, कैश गोल्ड एडा रख परियो तमे, यू कैन नॉट कीप माने फॉरेन करेंसी भी रख परियो, कैश गोल्ड फॉरेन करेंसी एडा रख परियो, बट यू कैन नॉट कीप तम गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी वगैरह रख परियोनी, राइट? बिकॉज़ यू नीड मोर लिक्विड लाइक एसेट्स हियर, एंड एडा तुम 0 to 100% नहीं परियो,
right? So though currently generally it is 3.5% or 4% limit ଥାଏ, but it can vary till 0 to 100%. କାହିଁକି 100% we will ଏଇ concept ଆମେ ଦେଖିବା। important ସାର୍ thing ଗୋଲ୍ଡ CRR ରେ ଆଉ ତମେ କଣ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ଟା ଆମେ ରଖିପାରିବା କି ଏଠି କ୍ୟାଶ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ରେ? ରଖିପାରିବା, ଗୋଲ୍ଡ ରଖିପାରିବା। So liquid ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପା, ତ liquid ମାନେ gold, foreign exchange, cash ଏଗୁଡା ସବୁ ରଖିପାରିବା। We cannot keep your government approved GCX वगैरह ରଖିପାରିବାନି ଏଠି, right? So ଏଇଟା main ଜିନିଷ ହେଲା ସାର୍ liquid asset ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି, okay। ତ ସାର୍ ହଁ କୁହ। So R limit la 0 to 100%. It is 0 to 40%, 0 to 100%, right? Generally, it is like, I think now it is 3.5%. Kete achi dawe? CRR kete achi? 4% ବୋଧେ। 4%, 3.5%. 4.5 achi, 4.5, right? So tomorrow last May 21 change achi 4.5 achi, and SLR achi amaro kete achi 4% ଅଛି SLR amaro ଏପ୍ରିଲ। SLR ଟା 18% ସାର୍। 18% ଅଛି, तो 4.5 and 18%, तो maximum say 0 to tomorrow generally बेसी vary change करंतुनी, right? Because ଏବେ बहुत सारा tomorrow problems आस्थिला and all, we had that COVID वगैरह, then किछ change वगैरह हेतु सति में, otherwise एटा generally some portion रखता है। तो SLR 0 to 40 हुए, एटा 0 to 100 हुए, right? 100 काहेंगे देखो, only एबे देखला को 4.5% अछि, why 100% cap रखछंदी? What is the reason? देखो आर मेन रीजन आसीबो एठी तमर इंक्रीमेंटल सीआरआर, राइट? जिनरो जो डिमोनेटाइजेशन तले हैला ना, डिमोनेटाइजेशन हैला, बहुत सारा पैसा बैंक रे डिपॉजिट हे गेला, करेक्ट और नॉट? नाउ you understand, ए जो पैसा अछि सीआरआर रे, you do not get any interest, it's a loss to the banks, you do not get any, banks do not get interest, correct? वर्तमान किंतु जेतेबेले तमर डिमोनेटाइजेशन हैला ना, तो तम पाखरे बहुत बेसी तम पाखे पैसा पड़े आसिला, करेक्ट? तो एबे तो बहुत तमर पैसा तमर अधिक तमर पळे आसिला बैंक पाखरे, व्हाट इज द टेंडेंसी? बैंक कौन करिवो? बैंक ताको लैंड कर दो, राइट? किंतु इज दैट मनी स्टेबल? से पैसा स्टेबल कि काली सकाळ की बेसी पैसा डिमांड कर परिवो? जस्ट बिकॉज एबे डिमोनेटाइजेशन नेछि, लोक माने समस्त जाई कि ताकर बैंक रे जे पैसा डिपॉजिट करछथि, बहुत जति एक्सचेंज करके दे हैव डिपॉजिटेड इन बैंक्स, तो बैंक में ना बहुत बेसी तमर बढ़ी गला तार डिपॉजिट उडा, बट नाउ दैट मनी इज वेरी लिक्विड। काली सकाळे जदि बैंक ताको लोभरे आसी कि लैंड कर देला, ताले हैरान पड़ जिवो, पुनी जदि किछ टाइम पर आसी कि लोक आसी जदि पैसा मागिले, इट विल बी इन ट्रबल। सेति में इंक्रीमेंटल सीआरआर कांसेप्ट आसिला। व्हाट इज इंक्रीमेंटल सीआरआर? एई वाला सिचुएशन जतले थिबो, now to suck that to make sure that extra money is not utilized, सी कोन करिवो ना 100% सीआरआर लगे देबे से एक्स्ट्रा मनी ऊपर, माने सेही पैसा तुम जमार लैंड कर परिनो, 100% तुमको आरबीआई रे डिपॉजिट करिया पड़िवो, 100% सीआरआर, right? That might be kept with the bank, interest तो मिलिवनी, but it cannot lend it, right? ताको ना incremental CRR, right? So हमरा से जो demonetization time रे, so there was your normal SLR, जोटा तमरो 4% तमरो normal SLR थिला, this is the actual पैसा, मतलब जोटा तमरो आसी नथिला, this is the normal money, no, sorry, SLR goes। सो बैंक पाखरे सपोज तम पाखरे पैसा थिला गोटे अमाउंट A1 थिला, परे A2 गोटे बड्डो अमाउंट पळे आसिला ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन। A1 ऊपर तम से नॉर्मल सीआरआर रेट लागिवो, लाइक 4% लागिला, बट जो A2 आसिला आ ऊपर 100% सीआरआर लगे देले, दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल सीआरआर। काहे कि बिकॉज़ ए पैसाटा बहुत डेंजर, आकु लैंडिंग कले असुविधा, एटा हठात आसीची, ए पैसाटा एमिति कि लोक माने सो इच्छा रे जाई डिपॉजिट देई नांती, एटा जस्ट गोटे गोटे एगुला सिचुएशन आसला, एमरजेंसी सिचुएशन, लोक माने ताकू माने डिपॉजिट कर दैछन्ती, काली सकाळ जब लोक इच्छा बा आसी पैसा फुट किना नै जिवे, नै गले एमान जदि लैंडिंग करती हैरान पड़ जिवे। मात्र 4% जदि आप लगेबे, 96% माने जदि लैंडिंग कर देले हैरान नै जिवे, आकु 4% रखिले माने डेंजर,
ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କଣ କଲେ, ଯୋଉ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ପଇସା ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ୟୁଜୁଆଲ डिपॉजिट नथिला बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी सिचुएशन लाइक डिमोनेटाइजेशन रखिଥିଲେ सम रीजन, तो आ पर 100% तमरो इनक्रिमेंटल सीआरआर लगे देला कि पैसा जमा लैंडिंग कर परिबनी। सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ एनी डिमोनेटाइजेशन हला, काली सकाळे माने वार हे जाऊ, जहां भी वार हे जाऊ, से चाहते लोक जान भाई नहीं सब पैसा बैंक डिपॉजिट कर दो, कौन कौन वार होची एंड ऑल, निज पाखर चोरी डकैती होची बहुत बेसी हमें बैंक रख देबो। से केस रे भी यदि चाहिला आरबीआई ताको 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर लगे परिबो, राइट, बिकॉज आरबीआई जानि छि एटा टेम्पररी, काली सकाळे मे बी 6 मास पर 3 मास पर सिचुएशन इंप्रूव होले लोकन से पैसा नहीं जिवे, तो सेति पय से पैसा 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर लगेबेले करे आ बैंक रन हबनी, असुविधा हबनी, लोक माने आसी कि आ ह्यूमन क्राइम हबनी, राइट। तो दिस इज द इंक्रीमेंटल सीआरआर। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमें जो ऑलरेडी कहउथिले कि तमरो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी रे जो तमरो G6 थिबो, व्हाट वाज दिस G6? दिस इज अबव द एसएलआर। एसएलआर रे हमें कहले देयर विल बी G6, राइट। तो ए एसएलआर रे जो G6 अछि कि तमरो 18% की जहाँ भी 20% जहाँ भी अच्छी तुम G6 छाड़ी कि एक्स्ट्रा जोड़ा माने अच्छी ताकू सेइथरे से माने लोन नहीं परिवे, LAF, राइट, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो सेटा किमिति किनंती, दैट इज समथिंग कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई कौन करे, गवर्नमेंट को यदि पैसा दरकार, आरबीआई गवर्नमेंट पई गवर्नमेंट सिक्योरिटी छपाए, राइट। आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को दरकार पैसा, तो आरबीआई कौन करिवो, गवर्नमेंट र बिहाफ रे G6 छपेबो, से G6 दबो काकू, सिविल कमर्शियल बैंक्स को, बैंक माने सेटा किनी कि आरबीआई को देबे पैसा, आरबीआई से पैसा दबो गवर्नमेंट को, एंड ए G6 रा किछि गोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ भी गोटे सम रेट दबो। बैंक काई दबो, अरे बैंक 10% लोन बुले था, सी 5% कहीं आरबीआई को G6 किनिबो, कौन दरकार, कौन दरकार? अरे मु तो प्रॉफिट करथन 10% लोन बुले था, मु आरबीआई को कम रे काई देबी, G6 काई किनिबी, मु बैंक एसबीआई मु 10% रे लोन देइथांती, गोटे कोटी थिला, से गोटे कोटी मु काई आरबीआई को G6 देबी 5%, 10% काई मु बाहर देबेनी। तो G6 सिक्योर एंड सेफ, सिक्योरिटी अछि कि पैसा वापस मिल जिवो, रिस्क नहीं। ओके, ताले सब पैसा लगे दोनु। देखो व्हाट इज द थिंग ना, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम जेती पैसा दी सब तुम लोन में बुले परियो, सबुडा को बुले देथियो कि नाही ना, सबुडा तुम बुले परियो लोन रे। देयर इज समथिंग कॉल्ड इवन तुमरो जो बासाल नॉर्म्स अछि, बासाल नॉर्म्स रे भी तो बहुत सारा लेंडिंग तुमरो क्राइटेरिया पकई छन से माने, तुम केति की तुमरो एसेट थिले तुम केति की लेंडिंग कर परियो, तुमरो एसेट पे डिपेंड करछि। तो बिकॉज़ ऑफ द बासाल नॉर्म्स हो सब बेले बैंक तार सब पैसा लोन देई परिबो नाही, इन्वेस्ट कर परिबो नाही। सो कोन करिवो, निज पाखे रखी खाली आइडल रखिबो नहीं, लॉस ना। तो जहाँ एक्स्ट्रा पैसा बढ़ला, जति मु देला परे मो पाखरे 2 कोटी बढ़ला, से 2 कोटी बिकॉज़ ऑफ सम रीजन मु लोन लगेई पारु नाही, तो 2 कोटी काई फांका रखिबी, तो 2 कोटी को मु गवर्नमेंट सिक्योरिटी किनी दे देबी, एटलीस्ट 5% तो मिलिबो, नाही मामु कोन मामु तो भलो 5% मिलिबो, राइट। तो एटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो ओपन मार्केट ऑपरेशन रे गवर्नमेंट को पैसा दरकार, आरबीआई गवर्नमेंट पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी छपाए, से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक्स को दिए, से पैसा आनी गिरी गवर्नमेंट को दिए, राइट, एंड गवर्नमेंट को तमरो like ता बदले the banks will be getting some interest, right, and एटा भी तमरो कहया गले लिक्विडिटी तमरो कंट्रोल भी तमरो एटा ओपन मार्केट ऑपरेशन भी काम आसे, लाइक हाउ जदी मार्केट रे मनी सप्लाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करे आछ, ताले कोन करिवो, इन्फ्लेशन कंट्रोल रे कोन करिवो, ओपन मार्केट ऑपरेशन किमिति यूज होबो जदी इन्फ्लेशन कंट्रोल करे आछि, आरबीआई टा सेल करी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करतो, करेक्ट। तो आरबीआई कोन करिवो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करिवो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कले कोन हबो, बैंक किनिबो, बैंक पैसा दबो, मार्केट रे पैसा मनी सप्लाई कमे जिवो। जदि आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन कंट्रोल करे आछि, देन आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। तो समटाइम्स मे बी इंटेंशनली गवर्नमेंट पैसा दरकार पड़ पारे बेले, intentionally also, though intentionally suck करे, there is something else, there is like we'll study that,
तमरो एक्सेस लिक्विडिटी सक करे ଗୋଟେ instrument ଅଛି बट हां ओपन मार्केट ऑपरेशन ने भी जल्दी गवर्नमेंट तांको इफ दे वांट टू कंट्रोल लिक्विडिटी से माने गवर्नमेंट सिक्युरिटी सेल करिवे गवर्नमेंट सिक्युरिटीज बैंक को बिकिले बैंक पैसा दबो मार्केट रे पनी सप्लाई कमी जीवो सिमिति उल्टा यदि करिया अछि डिफ्लेशन कंट्रोल करिया अछि ताले हमर किनी देबे गवर्नमेंट सिक्युरिटी तांगटू गवर्नमेंट सिक्युरिटी किनिबे पैसा बैंक को देबे ता बदले तमरा जोटा हमें जो रिवर्स रेपो देखिथिले रिपर्चेस जोटा राइट तो तमरा तमरा जने रिपर्चेस करिवे राइट तमरा से गवर्नमेंट सिक्युरिटीज को तमने रिपर्चेस से माने करिवे राइट एंड ता पे से माने गवर्नमेंट टू G6 गुडा बैंक टू किनी देबे वापस एंड पैसा दे देबे ता द्वारा मार्केट में मनी सप्लाई तमन बढ़ी जिवो एंड योर डिफ्लेशन विल बी कंट्रोल्ड okay so this is an open market operation this I was telling market stabilization bond sometimes कौन हुए ना even government open market operation generally the government को पैसा दरकार था करंती right it is not used as a monetary policy tool a liquidity हमें ना concept टा जानू छु but it is not usually used by RBI तमरो एवडा सब यूज करे नहीं right RBI जनरल तमरो जो लिक्विड जो रेपो रेट को यूज करे एज ए टूल राइट बाकी जो बैंक रेट हे गला एडा सब हम पढु छु बैंक रेट भी तमरो सेम तम जदी बैंक रेट तमे बढ़े दबो लिक्विडिटी कमी जीवो बैंक रेट कमे दबो लिक्विडिटी बढ़ी जीवो राइट ऑल दिस कैन बी यूज्ड बट जनरली RBI एडा सब यूज करे नहीं राइट मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड कोन जतले बहुत बेसी तो मार्केट रे पैसा हे जाय देयर इज बहुत लिक्विडिटी पळे आछि राइट फॉर एग्जांपल तमरो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन बहुत बेसी तमरो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश आसी गला तमरो मार्केट रे राइट लोगन एक्सचेंज करले ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश आसी गला तो आज कोन होबे एते ह्यूज लिक्विडिटी आसी गले देयर विल बी इन्फ्लेशन तो आको किन कंट्रोल करिवे दे हैव टू नाउ सक द लिक्विडिटी तो आको कंट्रोल करे को दे फ्लोट समथिंग कॉल्ड मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स तो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स मन काम करिवे लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन ओनली ओपन मार्केट ऑपरेशन थ्रू रे गवर्नमेंट सिक्युरिटीज देबे पैसा सक करिवे but now this money will not be used by the government खाली आप इंटरेस्ट दबो बैंक्स को but government को ये पैसा दरकार नहीं government पे पैसा ए ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट को पैसा दरकार थिले करंदी गवर्नमेंट सिक्युरिटी छपांदी तो गवर्नमेंट को पैसा दरकार राइट बट मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड इज समथिंग अननेचुरल यदि गवर्नमेंट को पैसा दरकार नहीं तबे भी से करिवे बिकॉज़ दे वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन से माने ए मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड दउचंदी बैंक को ता बदले लिक्विडिटी सक करचंदी okay and this is your market stabilization bond right and even this is tamara aku market stabilization bond and aku sterilization bhi kohandi is called sterilization market ro tamara jo extra liquidity ku suck korcho okay how good the concept on dekhi daba then we will like wind up ठीक है अच्छा then what is quantitative easing माने कोन माने डिफ्लेशन है खतरनाक डिफ्लेशन राइट देयर इज पूरा मनी सप्लाई नहीं मार्केट रे रिसेशन आसी छी खतरनाक रिसेशन मार्केट रे आसी छी रिसेशन पूरा आसी मार्केट रे पैसा नहीं देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज नेगेटिव ग्रोथ रिसेशन आसी ग्रोथ इज नेगेटिव अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भारी खराब तो गवर्नमेंट कौन ना क्वांटिटी यूजिंग माने गवर्नमेंट पूरा पंप करे राइट आको प्राइमिंग भी कोंदी प्राइमिंग ऑफ मनी हेलीकॉप्टर मनी प्राइमिंग कोंदी ना हेलीकॉप्टर मनी काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर मनी आको प्राइमिंग भी कोंदी राइट तो व्हाट दे डू ना से माने बहुत बेसी तमरा फ्रेश जो करेंसी हो इंटरेस्ट रेट को बहुत कमे दियंती राइट एंड तो बहुत जो व्हाट यू कॉल एक्सपेंशनरी मनी पॉलिसी से माने अपनांती टू पंप द लिक्विडिटी इन द मार्केट राइट पूरा पैसा हेलीकॉप्टर उड़ेला भलिया तुमर पूरा प्राइमिंग पूरा पैसा तुमर पूरा मार्केट रे अजाड़ दियंती राइट सो देखिए द टर्म क्वांटिटेटिव ईजिंग डिस्क्राइब्स एन अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ मॉनेटरी
easing, right? Unconventional, generally करा हुआ नहीं, बहुत बेसी liberal कर दिया, expansionary कर दिया, to stimulate the economy, right? In the US after the Lehman Brothers crisis, in the US after the Lehman Brothers crisis, it involves a central bank buying financial instruments which ordinary times which are not accepted for open market operation. देखो open market operation में से माने अलग अलग security भी से किन लेनी, right? Unconventional ways. I am not telling गोटे way open market operation में गुड़ाए किनुचंती गुड़ाए पैसा छापुचंती, but माने different ways से माने कोशन to pump the money. Right? So the open market operation पूर्व खाली government security नौथिले बर्तमान अलग अलग securities भी नेले, right? It is a step that is taken after the interest rate reduction to very low levels and similar downward trend adjustment of reverse ratios like CRR fail to in देखो एटा केतल नौचंदी जेतबेले से माने interest rate repo rate कमेला पर बेसी किछ लाभ हेलानी, इवन तमर जो रिजर्व रेशियो भी कमे देले, जो रखुचंती बैंक टू रिजर्व रेशियो ताकू भी कमे देले ताकि आउरी से माने लेंडिंग बढ़ांतु, राइट? तो से माने तांकर जहा कन्वेंशनल टूल्स थिला रेपो रेट कमेबा कि तमर रिजर्व रेशियो रखुचन ताकू कमे देले, स्टिल किछि लाभ हेलानी. It involves printing fresh currency, buying debt paper which is otherwise substandard, thus flushing money into the market. माने कुछ तो डिफरेंट वे करी ओपन मार्केट ऑपरेशन ने तमे जो अगा मगा फगा सब तमे सिक्योरिटी एक्सेप्ट करछ, पैसा मनी प्रिंट करछ आरबीआई एक्स्ट्रा, राइट? तमरो जो सब डेप्ट बॉन्ड जोड़ा पूरा लो रेटिंग थिबो, नेगेटिव रेटिंग थिबो, किछि बॉन्ड जोर माने रेटिंग भल नथिबो ताकू भी किनुचंदी, राइट? जस्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन जस्ट टू pump more money, right? But then this is a liquidity trap. You have to be careful. Helicopter money is risky. केतबेले एटा तमरो इन्फ्लेशन सिवियर इन्फ्लेशन हे जे जानि परिबोनी, राइट? यस एटा किछि किछि तो तमरो डिमांड स्टिमुलेट कर दबा बिकॉज़ देयर विल बी मनी, बट देन इट हैज टू बी यूज्ड विथ कॉशन, राइट? केतबेले इट विल लीड टू लिक्विडिटी ट्रैप. तमे जो एते बेसी तमर हाइपर इन्फ्लेशन पका जमा पड़ला पर हे गेला जे पुनी तमे लाइक माने असुविधा रे पड़ जिवो, तम करेंसी डिवैल्यू हे जिवो टू कंट्रोल योर इन्फ्लेशन, राइट? So this is a quantitative easing. Okay, so we saw all the your quantitative tools. So next next class देखिबा हमें qualitative tools देखिबा ठीक अछि. हेलो सर, हेलो हां को हेलो सर, ये को पीडीएफ के प्रोवाइड कर मैं मु कहली ये पीडीएफ के प्रोवाइड कर देबे. फोटो उठे दोनो क्लास रे, आज्ञा अरे फोटो उठे दियो क्लास रे, पढ़ला वीडियो रिकॉर्डिंग देख दो, रिकॉर्डिंग देखले फोटो उठे दो. रिकॉर्डिंग रहइबो तो हां ठीक और ठीक YouTube रे रहिबो कि YouTube रे जो पढ़िबो एडा. हां, सो है. YouTube रे पक्का हुआ रिकॉर्डिंग एडा. ओके, जैसे कि और हिस्ट्री के तो सारा आंसर राइटिंग कर दे. स्टार्ट करियो ए वीकेंड स्टार्ट करियो हिस्ट्री आंसर रेडी. हां सर, ठीक है. ओके, सो नमस्कार थैंक यू. हां सर नमस्कार. टिके सर टिके हाँ. इथिक्स सेटी आनथांदे सेटी नुवा पार्ट आड ही सेटी बुझिया कष्ट हो जाउजी. एथिक्स कोन माने पढ़िया पई